घूमेगा बहुत Yeah, I'll just share my screen. Is my screen visible? Okay. So good morning, everyone. Welcome to the final trading session of the week. Today we have Sensex expiry. So start करेंगे तीनों indices के key levels से. So start करते हैं निफ्टी से. कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया है, लेकिन आज अच्छा बाउंस बैक दिया है निफ्टी ने. अगर हम चार्ट पे देखें तो अच्छी खासी कल का जो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का कट था उसमें से 100 पॉइंट्स वी हैव रिकवर्ड एंड वी आर कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउट 22,500 which was the key support area for Nifty, but still कल का एक हाई लो would be a major point wherein कल का हाई है 22,705 और लो है 22,488. तो ये एक नेगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. तो 22,750 700 एक बार आज के लिए 700 और 750 आज के लिए एक हर्डल बन सकता है निफ्टी में. while on the downside 22,500 एक सपोर्ट है एंड ऑल द लेवल्स आई एम टॉकिंग अबाउट आर स्पॉट लेवल्स. तो नीचे में 22,500 एक इंट्राडे सपोर्ट है, ऊपर में 22,700 750 एक की रेजिस्टेंस एरिया है फॉर निफ्टी. तो एक ऊपर से थोड़ा सा अगर प्रॉफिट टेकिंग आता है तो 22,700 750 के आसपास से आ सकता है निफ्टी में. while on the downside 22,500 एक सपोर्ट है एंड वी हैव की इवेंट्स कमिंग एंड लाइंड अप. जैसे कि कल फर्स्ट है तो इलेक्शन का exit poll results would come and the eventual outcome of the elections are on June 4th. तो volatility would be high, so swings रहेंगे market में दोनों तरफ. तो keep your position sizing as per the event and keeping the event in mind. तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें, कल बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, where Nifty was down by almost 200 points, but Bank Nifty was up by 180 points. So Bank Nifty के अगर चार्ट देखें तो कल एक प्रीवियस डे का सेलिंग कैंडल नेगेट किया है और आज पॉजिटिव ओपन हुआ है. तो 49,250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है, बट 48,750 एक सपोर्ट भी है. तो टिल द टाइम वी आर अबव 48,750 वी फील दैट अ बाउंस बैक टुवर्ड्स 49,250 एंड 49,500 कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन बैंक निफ्टी. ऑल दीज आर स्पॉट लेवल्स. और कल हमने देखा HDFC बैंक एंड ICICI बैंक ने फिर से लीडरशिप टेक ओवर की है. तो जब तक HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दो स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी विल नॉट correct more, or even if it does not go up, but it will not correct much. So I feel that ICICI Bank and HDFC Bank जब तक होल्ड कर रहे हैं, which is almost 60% of the weightage in Bank Nifty. So 48,750 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, while 49,250 एंड 49,500 अपसाइड थोड़ा सा हर्डल है. अगर सेंसेक्स की बात करें तो आज जिसकी एक्सपायरी है उसका की सपोर्ट है 73,500 एंड 73,250, while immediate resistance point है 74,800 एंड 74,500. उसका VWAP वीकली VWAP है 74,700 एंड करंटली वी आर ट्रेडिंग बिलो द VWAP. तो एक अपसाइड कैप्ड सजेस्ट कर रहा है, बट एक रेंज पॉजिटिव बायस हो सकता है, बट अपसाइड कैप्ड है इन सेंसेक्स. अगर कैश स्टॉक की बात करें जो हमारा टेक्निकल पिक ऑफ द डे है, विच इज डिक्सन. आई विल शेयर द चार्ट. सो we are recommending Dixon to buy with a stop of 9,000 and a target can be placed at 10,000. तो ये एक ट्रेड टेक्निकल सेटअप है जो हमारे टेक्निकल पिक ऑफ द डे भी है. तो लुक फॉर 10,000 on the high side on Dixon with a stop of 9,000. एंड एक और स्टॉक जो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए देख सकते हैं वो है NHPC. तो आज का डील हो 101
तो इंटरडे के लिए लुक फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 106 एंड 108 with a stop of 101 for on NHPC. तो NHPC पे ध्यान रख सकते हैं इंटरडे के लिए with a stop of 101 look for 1067 and 108. तो NHPC इंटरडे के लिए आप देख सकते हैं look at for 106 and 108 on the high side and आज का लो 101.4 है तो keep a stop of 101. तो ये एक ट्रेड सेटअप अच्छा दिख रहा है फॉर इंटरडे ट्रेडर्स. तो एक टेक्निकल पिक वी हैव शेयर्ड डिक्सन लुक फॉर 10,000 9,000 इज अ स्टॉप. NHPC फॉर इंटरडे ट्रेडर्स एंड ऑल द इंडिसेस के की लेवल्स वी हैव शेयर्ड. निफ्टी में 22,500 नीचे में, ऊपर में 22,700 750 एक हर्डल है एंड बैंक निफ्टी 48,750 सपोर्ट है, 49,250 एंड 49,500 immediate resistance point है. So look for the swings between the support and the resistance point. So I think in the meantime, if I get any other intraday trade setup on stock, I'll definitely share. So couple of stock ideas we have shared for positional and intraday. Positional, you can look at Dixon. Intraday, you can look at NHPC. Look for 106, 108 on the higher side on NHPC and 101 is your stop. So I think in the meantime, we'll take some stock specific queries. अगर कोई सेटअप रहेगा स्टॉक में तो आई डेफिनेटली कम अगेन ऑन टू इट. Just a moment, I'll just check. COCHR. So कोचिन अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली में ऑलमोस्ट 1800 से वन साइड रैली हुआ है. तो आई थिंक इफ यू कीप फॉर 1-2 years you can see at least 2,500 3,000 on कोचिन शिपयार्ड. 690. Oh, oh, it's almost the all time high. बट फिलहाल आई थिंक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है. अगर मैं देखूँ ट्रेंड लाइन से आपको आई कैन शो द चार्ट. तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ सकता है अबव 355 एंड 360. तो 360 अगर निकल जाता है तो ऊपर में 390 तक भी आ सकता है. बट एक नेगेटिव ट्रेंड में है. And out of all the Adani group stock, I think Adani Port, ACC and Ambuja are the best stocks out of the whole lot. So focus on these three if you want to be with the Adani group. MRPL थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है. आई थिंक एकदम क्रूशियल सपोर्ट है 198. अगर 198 ब्रेक करता है तो आई ऑलमोस्ट 180 भी आ सकता है. तो 198 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक. NHPC कितना है या कर सकते हैं इंट्राडे के लिए तो यू कैन डेफिनेटली डू. कीप अ स्टॉप ऑफ 101 एंड डू लुक फॉर इंट्राडे स्विंग ऑफ 105 106. सैंड एज वी हैव सीन थोड़ा सा नेगेटिव सेटअप ही है. एक अटेम्प्ट किया था ऑन 27 में टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज. बट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है वापस सेलिंग प्रेशर आ जाती है. तो आई थिंक 1680 इज वेरी क्रूशल फॉर सैंड. अगर वो ब्रेक कर देता है तो आई थिंक 1650 एंड 1610 भी आ सकता है. तो 1680 इज वेरी क्रूशल सपोर्ट. जीरो आई थिंक होल्ड कीजिए. आई थिंक 1355 1350 के स्टॉप से होल्ड कीजिए.
ICICI Bank should be your pick. ICICI is the best out of all these three. बायोकॉन होल्ड कीजिए आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली पे आया है और रीटेस्ट किया है तो होल्ड कीजिए वेट कीप अ स्टॉप ऑफ 294 एंड होल्ड लुक फॉर 330 ऑन द हाई साइड अगेन नेगेटिव ट्रेंड में है स्टॉक तो आई थिंक 530 एंड 520 ये दो क्रूशियल सपोर्ट है अगर वो ब्रेक करता है तो और करेक्टिव फेज आ सकता है IOB bought at 63 ना तो कीप a stop of 62 61 keep a stop of 62 61 and hold and on the higher side look for 74 493 oh it's almost the highest point आई थिंक 420 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक एक बाउंस बैक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्स डिविडेंड भी ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक यू वुड हैव गॉट डिविडेंड आल्सो because I think your buy price is much higher than the dividend ex dividend date. So I think you might have got the dividend as well. So that will reduce your cost price. So keep a stop of 420 and hold. एक bounce back trade towards 470 475 आ सकता है. For bull run, if I think CPSE is a way to go. Even Monday क्यों लेना है? Buy in a staggered way. Don't get into anything in one go. I think PSU stocks, Gale है, your BEL है, defense name है, then NTPC. ये सब stock will do well for the next 3 4 years. आई थिंक इज बिकॉज कि मेजर रोल ओवर्स उस दिन पे होते हैं इवन एफ आई के पोजीशन जो दे यूजुअली डू एक्सट्रीम जैसे कल उन्होंने ऑलमोस्ट 2.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए हैं नेट शॉर्ट है अभी 13% लॉन्ग शॉर्ट है तो ऑन दैट डे हाईएस्ट वॉल्यूम्स भी होते हैं हाईएस्ट पोजीशन स्विंग होता है विच इज व्हाई द स्विंग्स आर मोर ऑन द एक्सपायरी डे especially on the monthly one because rollovers are there for futures and stock futures. एक सपोर्ट पे ही है आई थिंक 75 एकदम क्रूशल सपोर्ट है तो जब तक 75 नहीं ब्रेक कर रहा है आई थिंक बने रहिए ट्रेड में लुक फॉर 84 85 ऑन द हायर साइड 75 ब्रेक करता है तो देन देयर इज सम corrective phase till 70 also expected. 184. Keep a stop of 167 and hold. 167 ब्रेक करता है तो आई थिंक थोड़ा सा और करेक्टिव आ सकता है मूव बट इफ यू हैव अ टाइम horizon of say 1 to 2 years there is no problem in that. Zomato after the result it is corrected तो आई थिंक लेकिन सपोर्ट पे आया 170 एकदम क्रूशियल सपोर्ट है तो 170 जब तक होल्ड कर रहा है यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग्स इन जोमेटो
and look for 190 on the higher side. And Infi beam, so very Infi beam. Okay. Oh, it's a very penny stock. Best avoid it. I think. Coforge. IT stocks थोड़े से नीचे से at least Coforge has seen a sharp corrective move from almost 6800 to almost 38 44 4300 एक बाउंस बैक आया है लेकिन थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग आई है तो जब तक ये गैप अप एरिया है विच इज 4800 टिल 4800 इज नॉट ब्रोकन आई थिंक एक फिर स्विंग आ सकता है 52 5400 की तरफ अगर 4800 ब्रेक कर देता है तो एक और करेक्टिव मूव स्टार्ट हो जाएगा या आपको फोर जी ओके लॉन्ग टर्म स्टिल कीप अगर लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट अगर देखें तो 4700 है 4700 अगर ब्रेक करता है तो और करेक्टिव मूव आ सकता है बट IT में be with the large caps TCS and Infi I think they have low beta and they have been historically performing well even अगर mid cap IT है तो look towards persistent rather than Coforge or OFSS that is Oracle Finance. Cash. I think long term support is 180, 180, 185. तो जब तक 180, 185 होल्ड कर रहा है लुक फॉर 195 एंड 200 ऑन द हायर साइड 180 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है SBFC SBFC का अभी करंट मार्केट इज 81 आई थिंक 80 इज वेरी मेक और ब्रेक लेवल 80 ब्रेक करता है तो आई थिंक 78 75 भी आ सकता है 80 इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक 80 लेवल I'm checking. I think we'll keep that NHPC only for the day. I think wait for the event to pass by. Don't try to second guess it. क्योंकि stock wise थोड़ा सा pressure है. तो why you want to burn your fingers in things? Let the event pass by. Then there are almost 250 trading sessions in the year. So one day will not make a huge difference. Okay. So, so 74, 75,000. Just a moment. I'll just check on these. 75,000, right? BSX. आज का ही है ना 31st में राइट 31st में why is it showing 0.3 I'm not sure ये कोड सही है क्या
100 पे आई एम नॉट श्योर ये लाइव फीड है क्या है, सो सॉरी आई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन के फीड्स नहीं है। ये जो आ रहा है आई एम नॉट श्योर दिस इज अ राइट कोट ऑन द बीएफएक्स। BS6 right, ये चली गई 75,000 मोदी साहब सोच ले। Okay, this is the one, yeah. अच्छा नहीं कर रहे हैं विवेकानंद में किधर है? I don't think ये लाइव कुछ सही है। BS6 करने का ही नहीं है, खाली दिख के आराम करो। I know मे का इसमें नहीं आ रहा है, I'm not sure, I'm not getting the live quote on it because ऑप्शन ये पुट आ रहा है, जून का आ रहा है, जुलाई का आ रहा है, जून का आ रहा है। I'm sorry, मेरे पास इसमें कोट नहीं है तो I won't be able to give anything on that. Castro, I think I've given you CST 112. 180 ब्रेक करता है अगर तो एग्जिट योर पोजीशन। बारिश होगा बोलो, आज बारिश होने का चांस है, ये तो आ गया। एमडी का वो इंडियन बैंक आ रही है। इंडियन बैंक एक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट हुआ है तो 555 वेरी क्रूशियल है। जब तक 555 होल्ड कर रहा है आप बने रहिए पोजीशन में, नथिंग टू वरी। 555 ब्रेक करता है तो एक 530 तक भी आ सकता है, तो 555 कीप अ स्टॉप ऑफ 555 एंड होल्ड। एमटा टेक्निक्स I'm sorry, I didn't got the name of the stock. KEM. MP है। एमटा टेक, ओके एमटा टेक, ओके। आफ्टर द रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा पुअर दिया था, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए वी आर स्टिल पॉजिटिव। तो अगर किसी का टाइम हराइजन 1 to 2 years है तो दे शुड डेफिनेटली गेट इनटू इट। Can you spell it? PIVIM. Pimta Labs, okay. 470. अगर आपका पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 460, अगर नहीं है तो डोंट गेट इनटू इट। आई थिंक दे आर बेटर स्टॉक्स देन दिस। वन 120 पे लिया है, 6 महीने से तो डिफेंस स्टॉक देना। आई थिंक आपने अच्छा पॉइंट पे एंट्री किया है तो आई थिंक बने रही है स्टॉक में। मेटल एज अ सेक्टर हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। आफ्टर द रिजल्ट थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है, लेकिन वापस से 160 158 से एक बाउंस बैक आ जाएगा।
तो बने रहिए स्टॉक में. कीप, आई गिव यू अ स्टॉप लॉस थोड़ा सा लॉन्गर वाला 157 और 155. 155 का स्टॉप से होल्ड कीजिए. ऊपर में वापस 175 180 आ सकता है स्लो एंड स्टेडी. Yeah, definitely. I'll just see. Yeah. So I think I've given 101 ka stop. So maintain that stop only 101. If it breaks, you have to exit. If it does not break, you will see 106, 108. Yeah. So I think that would be it. Do join in at 2:30 for the expiry play on the Sensex, which is also a monthly expiry. So swings would be there. So that would be it. Thank you, everyone. Thank you so much.